ये एक 2003 का ऑनर किलिंग का एक जजमेंट है जिसमें एक इनोसेंट कपल अपर कास्ट लोअर केस कास्ट होने की वजह से जो ब्राइड था उसके फैमिली ने दोनों को ही मार मार दिया मतलब मार डाला इन अ वेरी ग्रूसम वे नाउ दैट्स the idea of this video is not to highlight on that aspect because I think in India there have been many cases similar to this or rather I would say I can recall there was one incident that was much more gruesome than even this one. यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों को जहर पिला के मार दिया बट मेरा कंटेंशन कुछ अलग है ना इस कंटेंशन को समझने के लिए थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं जजमेंट के थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं टाइमलाइन का ये दो क्राइम जो हुआ 2003 में हुआ उसके बाद कुछ लैसेस थे बहुत कुछ हुआ जो कि मेन मुद्दा है इस वीडियो का फिर 2004 में ये हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया फिर उसके बाद जाके चार्जशीट 2017 में फिर 21 में जाके जजमेंट पास हुआ नाउ ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 17 साल चला टोटल केस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20-22 साल का होगा तो जो कि कुछ अगेन नया नहीं है इन इंडिया आई मीन there is there is a saying called delayed justice is justice denied. If you look at the timeline, I do not know what would you say or what would anybody say for that matter. But anyway, now coming back to the main story of this event. Okay, and there is one other thing that happened. That is, end of this judgment, जो victim है उनको सुप्रीम कोर्ट 5 लाख रुपए कंपेंसेशन देते हैं जो कि विक्टिम के फादर और उनके स्टेप मॉम रहते हैं उनको 5 लाख रुपए कंपेंसेशन देते हैं फॉर द लैचेस आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन द सुप्रीम कोर्ट डिडंट से व्हाई दे आर डूइंग इट आई कम बैक टू दिस compensation part later on now let's go to a very important section जो कि मेन मेरा कंटेंशन है ये वीडियो बनाने का यहाँ पे दो पुलिस रहते हैं जिसके यहाँ पे A14-15 करके नंबर दिया गया है नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट बट एनीवे नाउ ये दोनों क्या करते हैं पहली बात तो जब इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर द डेट ऑफ दैट इंसिडेंट दीज टू पीपल दे डिड नॉट टेक द एफआईआर एक मर्डर के केस में आप समझ सकते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं ले रहा है उसके कुछ दिनों बाद मीडिया का गांव वाले का दलित संप्रदाय के है दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड अंडर immense pressure from the both the locals and the media they finally probably after 9 days they took the FIR 9 दिन के बाद अब ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 17/7/2000 उसी मतलब कुछ दिनों के बाद एक ये दोनों मिलके एक गलत FIR बनाते हैं ये जो एफआईआर दिख रहा है ये एक गलत एफआईआर है जिसमें ये लोग क्या करते हैं जो मेन अक्यूज्ड है जो परपिट्रेटर्स है उनके फैमिली मेंबर्स उनको छोड़ के गांव के कुछ दूसरे मतलब दलित संप्रदाय के लोगों को ही उसमें फंसा देते हैं उसमें ही नाम उनके जोड़ देते हैं एंड प्रेजेंटेड के यही लोगों ने ये सारा किया ना उसके बाद ही जाके फिर ये सीबीआई को ट्रांसफर होने का मतलब मुद्दा आ गया ना यहाँ पे 2-3 सवाल है नंबर 1 जैसे कि मैंने कहा कि एक मर्डर केस में एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं ले रहा है तो ये पॉसिबल है कि मतलब विदाउट द गाइडेंस और विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द आईसी क्या ऐसा हो सकता है और इवन रादर एसपी इवन किसी का मर्डर हो गया बट दे आर नॉट टेकिंग एफआईआर उसके बाद जब एफआईआर एक बनाया भी गया दे हैव implicated innocent people just to frame them and
just to get away with the administrative procedure. यहाँ पे भी एक सवाल आता है, is it really possible to perpetrate this kind of act without the involvement or the assistance or affirmation from IC or the SP? Is it really possible? My conscience or understanding says no. It is never possible. This is a complete, it's a crime actually, an organized crime committed by the police authority, starting from SP, then the IC, and the other police officers. And if possible, I mean, even IG or DIG, they can also be implicated, because I'm sure when this matter was highlighted, they also somehow came to know. The High Court, when the matter went to High Court, then the High Court decided to, uh, sh- give this investigation to the CBI for the sake of uh, partiality or biasness. But still, this is a kind of blindness that judiciary often, you know, what would you say, gives when it comes to delivering, you know, uh, justice. Because this is something that can, from a mere producer, it can be understood that these are definitely not the only two people who are involved. There are other officials who are involved. Without their involvement, it is never possible to perpetrate such an act. Not taking FIR, taking false FIR, implicating people, trying to protect, the family members' influence. Think about how much money probably they would have paid just so that those perpetrators, those accused, they can save themselves. And the court simply, you know, gave a blind eye to all these things. And I've seen this. I mean, this instance or this kind of precedent is pretty much can be seen in many cases where it is clearly visible that the officials or the executive branch is misusing their power, committing serious crimes, but still judiciary is not raising any question. The only question they ask when it is a matrimonial suit, that's where all their rationality, their morality, their ethics, all starts coming down. But when it comes to crime committed by states, the executives, no ethics, no morality, no values, nothing. And the mockery, I think, is heightened by this amount. 5 lakh. Two lives were lost. Many people were harassed. Countless, I mean, the can't even imagine how much pain and suffering these people had to go through. And 5 lakhs, इन्फ्लेशन भी शायद इससे ज्यादा हो गया होगा. 5 लाख अगर कोई उस समय रख दे, मतलब कुछ रुपए, वो अभी तक इन्फ्लेशन में शायद 5 लाख आ जाते हैं. I think I would have appreciated if Supreme Court had asked state to write an apology note. And that apology should have been the handwritten, started from the head of the police, then the SP, then the IC, and all those other peoples who are there. And handwritten apology note would have been much better, rather than this is a mockery, because you know two, I mean, lives were lost, people suffered immensely, and 5 lakhs. I do not know. I mean, the viewers, I would really appreciate if you have something to say on this. Thank you.